Welcome students, welcome to our another video lecture. In this lecture we are going to discuss about the process control and monitoring of different fermentation parameters. And these parameters include temperature, pH, agitation or aeration and foam. So these are the different parameters which are important to control during the fermentation process to obtain our required product. Okay, so this is the typical diagram of monitoring of fermentation process. In center, the fermenter or the bioreactor is been shown, which consists of the agitators. To that agitator, impeller is been attached for the mixing. At the side, baffles are been attached. Now this diagram shows the monitoring of the certain parameters like temperature, pH, dissolved oxygen, etc. Now see, from upper side the anti-foam agents are been inoculated or been inserted by using certain pumps, peristaltic pumps. Okay, at the side the foam, temperature, pH and probes are been there. That probes are this all the foam, temperature, this all the devices or all the control system is connected to the specific unit known as the process controller. This process controller is directly connected to the thermostating unit. Now thermostating unit, in this diagram you can see there is water in and water outlet is been shown. Water in and water outlet, this both are controlled by the pump. Okay, by the action of the pump. The heater is been connected to the fermenter tank, which regulates the temperature of that fermenter via baffles. Okay, that is the cooling jackets. And this thermostatic unit via fermenter is connected to the process controller. So this is overall diagrammatic structure of the monitoring of fermentation process, how actually the process is been monitored. Okay, so let's see in detail one by one. The first is temperature. Now temperature is very important parameter. These all are very important parameters. Why these are important parameters? To obtain our desired product in maximum yield. Okay, this is the main and first reason. The second reason is that our microorganism, our strain, it must not change its property, it must not fluctuate its property. So it's necessary to maintain different parameters according to the media used in the fermentation medium. Okay, so temperature it is an important parameter of fermentation, since in the growth of microorganism during the process. See, different strain require different optimum temperature to obtain different products. So according to that strain and according to the media we have used, we set the temperature or we adjust the temperature. Now temperatures are being adjusted by different, or to control the temperature we use the different instruments like thermometers, thermocouples, thermistors, resistance thermometer and integrated circuit device. Okay, so these are certain types of the you can say temperature measuring instruments. Okay, so if we will talk about the thermocouples especially, so these thermocouples, these are the electric device for measuring the temperature. Okay, and it consists of two wires of different metals connected to two different points. Okay, so that is the thermocouple, which is an electrical device for measuring temperature, which consists of two wires, and that two wires are made up of two different metals which are connected to two different points. Okay, so this is the thermocouples. Next is the thermistor. Now thermistor, these are the semiconductor which exhibit change in the electrical conductivity with the temperature. As the temperature changes, it changes its conductivity. Okay, means thermistors are the semiconductors. Now what are semiconductors?
this it shows the property of conductivity, okay, between the conductors, that is the semiconductors. Example, if we will see of the semiconductor, then silicon is widely used as the semiconductors, okay. So these are made from the pure oxides of iron, nickel and other metals. Their main characteristic is a large change in the resistance with a small temperature change, okay. This is very important characteristic. Large change in the temperature means what? Large change in the resistance, okay. जब large change होता है resistance में, resistance means what? The resistance is indicated by the unit ohm, okay, ohm, ohm. So resistance is opposition of the current flow in the circuit, that is known as the resistance, okay. It is a physics related term. Opposition of the current flow means if one current is positive flowing, then other will be negative. So there is opposition of the current flow in the circuit. So that is known as the resistance. You might have studied in your earlier standards. Now what is the main characteristics of thermistor? It shows the large change in the resistance with a small temperature change. मतलब अगर छोटा सा भी टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो इमीडिएटली वो थर्मिस्टर डिटेक्ट करेंगे और इमीडिएटली टेम्परेचर उस अप्रोप्रिएट लेवल में एडजस्ट हो जाएगा, ओके. सो टेम्परेचर रीडिंग इज ऑब्टेन with Wheatstone bridge circuit, okay. In 12th physics you might have learned what is Wheatstone bridge circuit. We are not going to go in detail in that. Just our main focus is how the temperature is been detected of the fermenter media, or how the temperature has been monitored in the fermenter media, okay. So material used in the thermistor is generally ceramic or polymer. So this is all. Sometimes the mostly wide used thermistors are platinum resistance, okay. The most widely used means the material used for manufacturing of thermistor is ceramic and polymer. If we will see the advantage of using thermistor, then they are relatively cheap and they are proved to be very stable measuring temperature device, okay. So this is all about the thermistors. And even we can use the thermometers, okay. So thermometers of different types are been available, like platinum resistance thermometers available as stainless steel. The example is platinum 100 sensors. These are usually used for measuring the temperature, okay. So different types of thermometers are being used. Even mercury glass thermometer is used. Mercury in the glass thermometer, it is used directly in the small fermenter, okay. अगर आप lab level में fermenter carry out करते हैं तो you can directly dip the mercury in the glass thermometer and predict the temperature, okay. So this is the type. And the temperature in the fermenter vessel is controlled by one of the following ways. तो दो ways दिए गए हैं. Then a heater is placed inside the fermenter vessel and cooling is ensured by the thin wall pipes which are located in the upper cover, which are connected with an electromagnetic wall with the cooling water. मतलब क्या किया जाता है, फर्मेंटर के अंदर हीटर प्लेस किया जाता है, ओके. और उसकी कूलिंग कैसे इंश्योर की जाती है, बाय द पाइप्स विच आर लोकेटेड इन द अपर कवर, okay, which are that pipes are connected with the electromagnetic wall with the cooling water. और करंट पास होने के बाद immediately it is been detected. So these are the ऐसे हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं इन द fermenter vessel. And second method is there, heating and cooling proceed in a thermostat, and this thermostated water with the help of the pump circulate through the fermenter jacket, okay. And the easy and quick method, कूलिंग जैकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. सो कूलिंग जैकेट्स भी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हो, ओके. सो टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द फर्मेंटर विद इन द लिमिटेड रेंज, the system may require regulation of heating as well as cooling by the control system. मतलब simultaneously
आप हीटिंग कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर रैंडमली आप हीटिंग कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, सो टू अवॉइड कंटैमिनेशन इन द फर्मेंटर वेसल, thermometers are usually fitted into the thin walled stainless steel pocket which project into the fermenter vessel। कुछ कुछ फर्मेंटर में डायरेक्टली थर्मोमीटर्स फिक्स किए जाते हैं इनटू द पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर सो दैट टेम्परेचर वहाँ पर कंट्रोल किया जाए। यहाँ पर टिपिकल डायग्राम दिखाई गई है ऑफ द टेम्परेचर कंट्रोल मॉनिटरिंग। हीटिंग जैकेट इज बीन देयर, सी जो हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस की, फर्मेंटर के अंदर हीटिंग जैकेट है। देन कूलिंग वाटर प्रोवाइड किया गया है। फ्लो मीटर है, मतलब फ्लो मीटर क्या करेगा, इट विल डिटेक्ट दैट टेम्परेचर इज बिन राइज्ड, और मीन्स फ्लो मीटर क्या करेगा, इट विल रेगुलेट द cooling as well as heating of that fermenter media। okay, so externally cooling water is been provided and heating jackets भी है, and from the side temperature probe है। टेम्परेचर प्रोब क्या करेगा, इट विल डिटेक्ट दैट टेम्परेचर वेदर इट इज़ हाई और लो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कूलिंग वाटर और हीटिंग जैकेट्स वहाँ पर अंदर है टू मेंटेन द टेम्परेचर। फ्लो मीटर वो कूलिंग वाटर और टेम्परेचर इफेक्ट या फिर हीटिंग इफेक्ट कंट्रोल करेगा। सो दिस इज द मॉनिटरिंग ऑफ द टेम्परेचर। नेक्स्ट कम्स द मॉनिटरिंग ऑफ द pH। नाउ fermentation process is normally carried out at a constant pH, or we can say at a optimum pH। okay, now depending on the microorganism used we select the pH कंट्रोल करने के लिए मेनली बफर्स पहले से ही ऐड किए जाते हैं, या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फर्मेंटेशन वी ऐड द बफर विच रेगुलेट्स द pH। बफर की प्रॉपर्टी की इट शोज द रेजिस्टेंस इन द pH। ओके, so that is there, and pH has a major effect on the cell growth and product formation because breakdown of the substrates and transport or conversion of substrate to the product through the microbial cell is completely depend on the pH। okay, now how the pH has been lowered or how the pH has been decreased or how the pH has been increased वो हम देखेंगे। अब लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट कम होंगे, कार्बन सोर्स अगर कम होंगे तो इट कॉजेज द सेल टू कंज्यूम मोर प्रोटीन। ओके, कार्बन सोर्स नहीं है तो सेल क्या करेंगे, इट विल कंज्यूम द प्रोटीन इन द मीडिया। ओके, और प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद, नाइट्रोजन सोर्स कंज्यूम करने के बाद वो क्या करेंगे, इट विल प्रोड्यूस द अमोनिया। okay, that ammonia is further converted into the ammonium hydroxide, okay, by the microorganism which increases the pH। okay, उससे क्या होगा, pH increase होगा। okay, अब pH कम कैसे होगा, how the pH has been lower down or how the pH drops during the production of the protein product। okay, अगर प्रोटीन प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं तो सेल्स क्या करेंगे, सेल कंज्यूम्स द अमोनिया फ्रॉम द मीडिया। ओके, सेल्स कंज्यूम द अमोनिया फ्रॉम द मीडिया एट द सेलुलर डिमांड फॉर मोर नाइट्रोजन। उन्हें ज़्यादा नाइट्रोजन सोर्स लगेगा एंड दैट कॉज रिलीज ऑफ द प्रोटॉन। यहाँ पर क्या होंगे, प्रोटॉन रिलीज होंगे, H+ आयन रिलीज होंगे। ओके, एज द H+ आयन रिलीजेस द pH विल ड्रॉप डाउन, मीन्स द pH विल बिकम इन द एसिडिक स्टेट। तो ज़्यादा एसिडिक होना भी इसेंशियल नहीं है, ज़्यादा बेसिक होना भी इसेंशियल नहीं है, तो pH मस्ट बी एट द ऑप्टिमम लेवल। ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस द सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड को pH लगता है अप्रॉक्स 6 to 7 और 6 to 6.5, तो वो आप उसको आप एसिडिक कंडीशन दे सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे कहा, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट आप आपका pH मेंटेन करते हैं, आप आपका pH रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द स्ट्रेन विच यू हैव यूज्ड एंड द प्रोडक्ट विच यू हैव टू फॉर्म। ओके, सो दैट इज द pH। अब pH भी अगर हम pH मॉनिटरिंग की डायग्राम देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। ओके, वो इलेक्ट्रोड्स बने हैं, द इलेक्ट्रोड्स में बी ऑफ सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड विथ पोटेशियम क्लोराइड। सो ऐसे इलेक्ट्रोड्स आप यूज़ कर सकते हैं, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड्स आप यूज़ कर सकते हैं to maintain, or in the combined form also you can use the electrode, just this electrode, these are connected to the
मीटर और दिस आर कनेक्टेड टू द पीएच कंट्रोलर. देखिए एसिड पंप दिखाया गया है, बेसिक पंप दिखाया गया है, एंड देन पीएच कंट्रोलर इज बीन देयर, पीएच एंड पीएच प्रोब इज देयर. अब जो सेंटर में दिखाए, द सेंटर इज द फर्मेंटर. ओके, पीएच प्रोब है. पीएच प्रोब इंडिकेट करेगा कि पीएच स्ट्रेन को कितना चाहिए, मीडिया को कितना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ दैट एसिड से H प्लस आयन रिलीज होंगे, अल्कली से OH माइनस आयन रिलीज होंगे, एंड दिस ऑल आर बीन कंट्रोल्ड और एम्पलीफाइड बाय द पीएच कंट्रोलर. सो दिस इज अबाउट द pH. Next comes the aeration and agitation. Now aeration and agitation provides the aeration actually. Okay, agitation की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है. ओके, सो एजिटेशन इज बिन प्रोवाइडेड बाय द इम्पेलर्स. So there is a continuous need of the supply of oxygen in the fermentation tank during the fermentation process, or limited supply of oxygen will affect onto the culture performance. Okay, so it is very important to maintain the ऑक्सीजन लेवल और डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आप इसको डिजोल्व ऑक्सीजन पैरामीटर भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो most fermentation vessels, these are equipped with the DO probes, that is dissolved oxygen probes. Okay, so these probes are easy to maintain and they are reliable. अब अगर हम इसका डायग्रामेटिक कंस्ट्रक्शन देखें, जनरली two types of electrochemical sensors are being used for measuring the dissolved oxygen. Okay, जब मैं dissolved oxygen की बात कर रही हूँ तो it is related to the aeration. तो कौन से दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड से, गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड एंड पोलैरोग्राफी इलेक्ट्रोड. ओके, नाउ वी विल सी द गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड. यहाँ पर डायग्राम दिखाई गई है. तो द इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ, ये दोनों इलेक्ट्रोड में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि कैथोड विच इज़ पॉजिटिव चार्ज, एनोड विच इज़ निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज़ किया गया है, एंड गैस और ऑक्सीजन परमिएबल मेम्ब्रेन. ऑक्सीजन परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक टेफ्लॉन. ओके, टेफ्लॉन ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है. नाउ कैथोड, कैथोड एनोड हम बार बार ये वर्ड यूज़ करते, क्या है कैथोड एंड एनोड, दिस आर नथिंग बट इट कैरीज द चार्ज. ओके, एंड इन दैट करंट लिव्स. ओके, करंट यहाँ पर होता है, चार्ज मॉलिक्यूल है, एंड करंट इज लिव्ड इन दिस कैथोड एंड एनोड. ओके, सो दैट इज द सिंपल कैथोड एंड एनोड. और मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया गया है. तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है, इट इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सॉल्यूशन. ओके, व्हेन डिजॉल्व्ड इन द पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट मतलब वाटर एग्जाम्पल है, विच कंसिस्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन. सो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है, ये एक सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं जब आप उसे पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन दिस बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स. ओके, तो पहले हम देखेंगे गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड. गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड इट कंसिस्ट ऑफ द एनोड. एनोड कौन सा है यहाँ पर, पीबी. पीबी स्टैंड्स फॉर द लीड. ओके, विच इज ऑपोजिट इलेक्ट्रोड. वर्किंग इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है, इट कंसिस्ट ऑफ द एजी, दैट इज द सिल्वर. इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब विच इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया गया है, एंड देन टेफ्लॉन इज बिन देयर. ओके, ये हो गया उसका जनरल कंस्ट्रक्शन. अब इसका वर्किंग कैसे होता है, कैसे डीओ एक्चुअली डिटेक्ट होता है, वो मैं आपको बता दूं. नाउ दिस इलेक्ट्रोड्स, कौन से इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड, मीन्स कैथोड एंड एनोड. द इलेक्ट्रोड प्रोवाइड्स अ हाई पोटेंशियल रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, ये इलेक्ट्रोड्स क्या प्रोवाइड करते हैं, हाई पोटेंशियल रिडक्शन. Means what, there is no need to provide external potential or there is no need to provide the extra charge. Okay, extra charge provide करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रोड्स ऑलरेडी उनमें काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी चार्ज है. ओके, सो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन. अभी फ्रॉम द लोअर साइड मीन्स व्हाट,
from the membrane, okay, from the downside oxygen पास होता है. So this oxygen diffuses across this Teflon membrane and interact with this both the electrode, working electrode as well as opposite electrode. So once oxygen enters through this membrane and passes to this two electrode, they produce an electric current. Okay, the chemical reaction at the anode and the cathode may generate a voltage. Okay, एक बार वोल्टेज जनरेट होगा तो वो डिटेक्ट होगा, it is detected as a signal for measurement of the DO. Okay, so that is how the DO is been measured. मतलब what, from downside the oxygen is been oxygen आता है, it passes through the membrane to this both the electrodes. Okay, electrodes में एक बार करंट पास हो गया तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होती है, क्योंकि वहाँ पर फर्मेंटेशन मीडिया भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है. तो केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होने के बाद इट जनरेट अ वोल्टेज, एंड दैट वोल्टेज इट गिव्स द सिग्नल which is used for the measurement of the DO. Okay, so this is all about the galvanic electrode. Next is your your polarized electrode, or we can say polarography. उसकी भी डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है. So polarography electrode is opposite to that of the galvanic electrode. Means what? यहाँ पर opposite case है. यहाँ पर as a cathode use किया जाता है, as a cathode it PB use किया जाता है. Okay, that is lead which is working electrode, और as a anode सिल्वर यूज किया जाता है विच इज ऑपोजिट इलेक्ट्रोड. ओके, इट इज ऑपोजिट ऑफ गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड. मेम्ब्रेन की तरह तो टेफ्लॉन ही यूज किया जाता है एंड इलेक्ट्रोलाइट KOH इज बीन यूज्ड. ओके, तो अब यहाँ पर होता क्या है, व्हाट इज द वर्किंग? द वर्किंग इज समवॉट सिमिलर टू दैट ऑफ द गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड. तो द फर्मेंटर इज बीन शोन. You can see the diagram. The fermenter has been shown. From downside the oxygen passes. इसका कंस्ट्रक्शन इट इज़ यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स का वेरिएशन है. तो इलेक्ट्रोड्स का वेरिएशन है तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का भी यहाँ पर वेरिएशन होगा. मतलब ऑक्सीजन इज डिजॉल्व in the any oxygen dissolved in the liquid is reduced at the surface of the metal cathode. ओके, पहले ऑक्सीजन जो सप्लाई किया जाता है इट इज बिन रिड्यूस्ड एट द कैथोड. ओके, कैथोड में वो ऑक्सीजन रिड्यूस्ड होगा. देन करंट इज जनरेटेड विच इज प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन. ओके, एक बार ऑक्सीजन रिड्यूस्ड होता है एट द कैथोड इलेक्ट्रोड विच प्रमोट्स द सिग्नल, विच प्रोड्यूसेस द सिग्नल. ओके, and that is directly proportional to the reduced oxygen at the cathode. Now the current, the magnitude of the current, it gives a direct measure of the amount of oxygen entering the probe. Okay, ये reduced oxygen ही क्या देता है, indication to the probe. Okay, so because the oxygen entering the probe is chemically consumed, जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पर क्या होता है, डोंट गो एट द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. मैं आपको सिंपल प्रोसेस में बता रही हूँ. यहाँ पर ऑक्सीजन जो एंटर हुआ है, ओके, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द लिक्विड, वो रिड्यूस्ड होता है एट द कैथोड. ओके, कैथोड में रिड्यूस होने के बाद ऑटोमेटिकली करंट प्रोड्यूस होता है एंड दैट करंट इट गिव्स द सिग्नल फॉर मेजरमेंट ऑफ द DO. दिस इज जस्ट द सिंपल फॉर्मुलेशन ऑफ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड. ओके, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड और पोलैरोग्राफिक इलेक्ट्रोड में, तो गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इट हैज़ अ लीड एनोड एंड सिल्वर कैथोड. पोलैरोग्राफिक इलेक्ट्रोड में ऑपोजिट केस है, सिल्वर एनोड एंड लीड कैथोड. ओके, गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड में दिस आर कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल फर्मेंटर्स, और पोलैरोग्राफिक इलेक्ट्रोड ये लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है या फिर पायलट प्लांट में यूज़ किया जाता है. ठीक है, गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड हियर KOH, फ्लोराइड, बाइकार्बोनेट और एसीटेट आर यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और पोलैरोग्राफिक इलेक्ट्रोड में
पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो पहले ही बता दिया था। वो एक सब्सटेंस है जो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सॉल्यूशन। जब वाटर के साथ वो डिजोल्व होता है, मतलब इट प्रोड्यूसेस द करंट, इट प्रमोट्स द करंट प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इफ वी विल डिस्कस इन डिफरेंस, तो गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड में देर इज नो नीड टू प्रोवाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल, लेकिन पोलैरोग्राफिक इलेक्ट्रोड में देर इज नीड टू प्रोवाइड एन एक्सटर्नल सप्लाई। ओके, क्योंकि गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड में दोनों इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं टू जनरेट और टू मेजर द DO, लेकिन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड में कैथोड का फंक्शन मेन है। ओके, बिकॉज इट हेल्प्स इन टू द we can say it helps into the reduction of the oxygen. Okay, so this is all about the we can say aeration or agitation. Next is foam. foam क्यों appear होता है? foam is appeared because of the aeration and agitation. Okay, सो फोम हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। फोम इज फॉर्म ड्यू टू द एरिएशन एंड एजिटेशन एट द हेड स्पेस लेवल. Okay, different types of antifoam agents are being used like silicone oil, vegetable oil, castor oil, olive oil, etc etc. Okay, so mechanical meter भी होते हैं foam के. To control the foam we use the mechanical meters also. Now why foam is being generated? Because जो ड्यू टू द एरिएशन या फिर ड्यू टू मिक्सिंग जो टेंशन क्रिएट होता है, वो टेंशन जो बॉटम सरफेस है वो टॉलरेट नहीं कर सकते, एंड सो इट कम्स इन द टॉप लेवल, इट कम्स एट द हेड स्पेस लेवल इन द फॉर्मेशन ऑफ द और इन द फॉर्म ऑफ द बबल, एंड दैट बबल इज बीन इंडिकेटेड एज द फोम. ओके, तो फोम को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट मे अफेक्ट द प्रोडक्ट yield as well as the strain. So different antifoam agents are being used to control the foam. Okay, this is all about the monitoring the different parameters. Thank you.